not relate it more with the trip that we had from Mumbai to Karjat till here as well. And this is a whole new different thing that we did that it is very unusual. So firstly, what do you have to say about that? You also traveled with both media buses. So if you could just tell me how was it for all of you guys? तो हर बार जब भी आपसे मुलाकात होती है बहुत छोटी सी मुलाकात होती है आते हैं मिलते हैं गाने के बारे में बात करते हैं और आप हमारे बारे में काफ़ी कुछ जान जाते हैं बट हमें आपके बारे में जानने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता सो आई थिंक टुडे वाज अबाउट दैट वी एक्सपीरियंस समथिंग इन ले टुगेदर we had a good time and we thought since we are promoting the song together so maybe we can all experience a little bit of that together by coming here and everybody needs to get out of uh, your space and kind of just take a trip off sometimes. Great. Sir, would you like to add on something? Well, hello everyone. So what about you want to ask about the music video? How did it go? Like, I asked you about the trip that we had so far from Mumbai to Karjat, okay, along with everyone. Not even close. Trust me. The only part was that when we went to the wrong side, right. the Jubin side. That was quite similar, but trust me, it was quite very hard work. Like सबको जल्दी उठना पड़ता था and 5 घंटे drive. Then you have to perform and the rest of the crew. Then, but if you decide it, you do it. Isn't it? True. And kudos to whole team जिन्होंने पाजी ने कहा कि नहीं कर लीजिए decide. मैं कहा पाजी let's do it on the other side. It was like 18,000 feet altitude. My God. And trust me, we lived in tents and no heaters. No heaters? No heaters. You're kidding. You're kidding me. My God. Oh my God. Can we have one more mic, please? Yes. Sure. Yes. I was saying that I slept with my jacket on that night because it was way too cold. Jackets and the blankets otherwise also? Everything. Oh, okay. And I was the only one who took bath in the morning. इतनी ठंड थी, but okay. True that. I think none of us used to wake up in the morning and could have a bath. Honestly saying, you would go take a bath in the morning. I don't know how I did that. I don't know you did that. Like as simple as how he took up the challenge of creating something like this, right? Yeah. maybe yeah, but it's all about like okay, Paji said we were talking about locations where to film it, and so I was trying to find easier options, and I know he was like indirectly, no, let's do it in Ladakh. Okay. We know because he knew what exactly he's looking at. Right. Then indirectly, you know, very. वो समझ गए बात समझ गए बात वो समझ आंखों में गए, देख के सब वो बात होती है Yes, exactly. right yeah. And we all know like Ladakh as we all know it is the most beautiful place in all around the India and उसी के साथ सुंदर होने के साथ साथ उसके काफी ज्यादा challenges भी आते हैं जैसे आपने कुछ यहाँ पर mention कर दिए हैं so what were the most extreme challenges you faced throughout the process of shooting it and while even when you were recording वगैरह so were you all prepared for the challenge and the challenge अगर कुछ आया you were clueless about how to deal with it so how did you deal with it then Well, not completely. We were prepared partially. Like we knew what क्या हो सकता है ना. Then, but पारी के साथ discuss किया. Even मैडम को भी clear किया गया कि you're coming from Sri Lanka to that much high altitude, so it could be difficult for you. But हाँ, रास्ते में एक दिन हमारा खराब हुआ. बस totally खत्म हो गई. Then we have to replace it with another bus. So that sort of challenges, but I think it's part of making a film. absolutely and So everyone सबने साथ दिया तो ही हो पाया क्योंकि otherwise जैसी locations पे जाके ये shoot हुआ है बहुत hard होता है. so Yohani like as he mentioned Sri Lanka to Ladakh to Leh so how was that sudden change for you how did you deal with it Yeah, I keep asking everybody. There's a whole India, like a very big area of India, and you guys chose Ladakh to shoot. And this was my first ever video Right. in India. right And the first single if I'm not wrong Yes. in Hindi music industry yes. wow So I keep asking them why.
And he has an answer for that. Because since you've seen Ladakh and you've experienced Ladakh, now you can literally go anywhere in India and shoot. That's true. It has made you very, very tough now. So all the challenges that will be coming up will be very easy. Yeah, Now, but, Jubin, but it was good. It was we managed. We are still alive. yeah. Oh, But it you was guys nice. are pretty much. Okay, so Jubin, I had one very curious question for you in my mind. So every time we've seen many of your music videos, and I am a very big fan of your music. And whenever I listen the first song that comes, wherein if you remember the one concert of yours, "Tujhe Kitna Chahne Lage," man, that is one of my most favorites. So now in this video, when I saw you in a different look altogether, with a different hairstyle and everything. So how did you did it was you who thought of getting into that zone? Yeah. How did that come up in your mind? So I think so I'll just go a little bit थोड़ा सा पीछे चलते हैं. मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने और नवजीत पाजी ने बहुत सारी वीडियोस साथ में Right. शूट करी हैं. लॉकडाउन में मतलब लिटरली हर 1-2 महीने में हम लोग कुछ शूट कर रहे होते Correct. हैं. और हमने काफ़ी अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करी साथ में, काफ़ी स्टोरीज जनरेट करी. वी मेड पीपल लाफ, वी मेड पीपल क्राई, we made people travel with us through different lives and different musics and journeys. तो एक ऐसा वक्त आ गया था जब पाजी और मैं हम बैठे थे, हम सोचे थे कि क्या कुछ हमको करना है. We want to do something different, something. कहते ना कि कुछ चीज़ें आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं और कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं. And we wanted to do something that we wanted to express. कुछ Right. बस पाजी कुछ ऐसा शूट करना चाहते थे जो something that he's not done before, something else. और मैं भी कुछ ऐसा साउंड करना चाहता था जो मैं पहले नहीं करा था. एंड जब मैंने और रॉकी खन्ना हम लोग साथ में म्यूजिक करते थे, Right. जब हम लोग ने ये गाना बनाया था, हमें नहीं पता था कि ये एक डुएट होने वाला है. Oh. एक सोलो सॉन्ग था ये. फिर हमारी मुलाकात योहानी से हुई. कहते ना कि जब आप एक बार अपनी मंजिल देख लेते हो तो फिर रास्ता अपने आप बनता एकदम चलता अपने है. आप खुल जाता है. So वो one thing led to another and it was just मतलब बहुत जल्दी प्रोजेक्ट मटेरियलाइज हो गया. कितनी बार महीने लग जाते हैं प्रोजेक्ट बनाने में, बट यू नो दिस प्रोजेक्ट रियली वेंट थ्रू वेरी फास्ट. योहानी केम, शी हर्ड द सॉन्ग, शी लव्ड द सॉन्ग. उसने पहले दिन आके डब कर दी. आई वाज वरीड कि ये हिंदी में कैसे गा पाएगी, मतलब बयां कर पाएगी बात या नहीं कर पाएगी. But she was so natural at it. She came, she dubbed. Most of the sections that we're hearing in the audio today are from the first dub, जो शायद Wow. हमने एक ऐसी हॉल में बैठ के करी थी. क्या So बात है. मुझे लगता है आर्ट के साथ ही कुछ ऐसा है कि वो मैं मानता हूँ हम लोग की क्या हैसियत है, हम कहाँ आर्ट बनाएंगे, तो ऊपर से आती है, हम सिर्फ जरिया बन जाते हैं उसका, और रास्ता एक एक करके जुड़ता है और मंजिल तक पहुँच जाते हैं. This was meant to be. I think this was something that was supposed to be, and I'm so happy that we are all getting to celebrate it together here like this again. You know, everything with this project. Tell me, एक दिन से फर्स्ट डे से बताता हूँ, हर चीज़ इतनी स्पेशल रही. हमको 5 दिन शूट करने का मौका मिला, हमको पूरा ले ट्रैवल करने का मौका मिला. एंड हम जब ले में थे, मी एंड योहानी, वी मेड अ न्यू सॉन्ग देयर दैट विल आल्सो हैपन नाउ. Wow. एंड व्हेन वी वर शूटिंग इन ले, बड़ी डिफिकल्ट कंडीशंस हैं. पाजी तो खैर बट पाजी को आदत है, मुझे भी आदत है. हमको अपने से ज़्यादा डर इसका लगा हुआ था. ये बेचारी छोटी सी, ये कहाँ से इसको हम लोग बचाएंगे अगर इसको ठंडी वंडी लगी थोड़ी. बट आई थिंक इट जस्ट sailed through very smoothly, and I'm very proud of what we've made today. It's not the usual kind of stuff that we do, and I love the fact that you guys are loving it, and I love the fact that the country is loving it. Yeah. Truly, yeah. Everybody, please give a huge round of applause for this one. Okay, now Yohani, coming back to you. You have performed with Jubin pehle in the song "Money Ke," which was a global blockbuster, and that was also the song that for me, it was the first song that I heard for you, and trust me, uske baad se the voice of yours is in my mind and in my heart. So, from that song to this zone, how was the transition for you, and how do you think you guys get along as performers in songs? Yeah. Well, from Manike to Samne, there has been a really long journey in between, I think. To start with, I've moved to Mumbai now. Correct. And working with him has been amazing. Wow. I mean, you're the first artist that I met in India. Really? Yeah. Woo! Yes, I still remember at T-Series. And from that to this, we've worked on so many songs now, and we've learned from each other a lot.
I've learned. I don't know about you. I've learned to. But it has been a great journey, and we are working on some other projects as well. So looking forward to those. Absolutely, I guess not just you guys, me and all of us are looking forward. Am I right? Yes, yeah. So those were the questions that I had for you guys. Now, before I hand it over to the media for their questions, there's this one little segment that I want to do it with you guys, and the name of this segment is called as "Put Your Finger Down." So, can I have your one hand up in the air, all three of you guys? Yeah. And these will be just 5 quick questions that you guys have to quickly answer. If you have ever done that, you will be putting one finger down. And yeah, so put your finger down if you have ever been on a solo trip, other than like anything for the work. On a solo trip. Yeah. Put your finger down if you have ever found some great company, some great friends while on any trip of yours. Yes? Okay. Put your finger down if you have ever decided not to shower while in Leh Ladakh. Okay. Put your finger down. थोड़ा मन था कि ना हो थोड़ा मन था. पर Correct. Honest जवाब दे रहे हो. Honesty के लिए आपको points मिलेंगे. Okay. Now, put your finger down if you would leave everything to travel the rest of the world in an RV for the rest of your life. In an RV, a road trip, for the rest of your life. Never. it's not practical. I see the reaction. देखिए अति का जो है अंत हो जाता है. अगर इतना ज्यादा आर्मी में ट्रैवल करेंगे तो फिर उतना मजा नहीं आएगा. मजा नहीं आएगा. Correct. And last but not the least, put your finger down if we would be seeing this team in many more upcoming projects like this. Yes? क्या बात है यार. Okay. So once again, give it up for the crew, everybody. यार. Amazing. Now I open up the stage for the media personals to bring in your questions. Yes? Hi, good evening. Mayur here from Beyond Bollywood. Some people will have to make way, please. You are not opaque. Hi. Hi, Yohani. Hi, Jubin. Obviously, I got a side view of the song. I think the first thing I would say, my initial impression is behind you, we can hear the sound of that stream. It's pure. And then in Leh, that's a beautiful clear sky. And then it's the tones of Jubin and Yohani. Thank you. I think that's my initial impression, and I'm like stunned, Yohani, for your first Hindi single. Because initially I was wondering that you might just have, like a couplet or just one odd verse. But it's like both of you, it's a proper duet. I think you briefly mentioned about that you basically got it bang on in your first dub, but I'm sure it can't be that, all that easy. There must have been obviously some, individual or mental preparation. Would you be able to talk about it? Yes. So the first time, I think, couple of the verses that you hear now is from the first dub, but I think the verses we took it separately because Jubin here changed the lyrics a lot of times. So I come prepared to record it, and he's like, "So yo, I changed a little bit," and he has changed just the entire words. So I was like, "Oh, it's cool." So I was like, "How am I gonna get it?" But he taught me really well, and Prasanna. Prasanna, yes. Prasanna. Prasanna is the guy who's produced the music of the. He was amazing. So I think all those elements got together, and here we are now. Obviously, Yohani, you're the Emerald girl from Emerald Isle. And when I look at you, in your young career so far, for a girl who was an accounting graduate, then she moved to singing, she became this singing sensation. And you kind of remind me, I don't know whether you heard of this name, but in the 80s there was this, brilliant singer from Pakistan, Nazia Hassan. The kind of impact she had, on, firstly Pakistani music and then Indian music and global, she became like this pop queen of Asia. And how do you react, if today somebody is to compare you with her and, they tell you that, you are representing Asia at a global scale? That's amazing to think like that. I don't have an answer for that, but I think everyone has their different elements and different journeys. So if you compare, I am so honored
But I think everyone has their separate journeys, and I'm still figuring out my one. It's a little bit cold. अरे बंद कर दो यार. Sorry. Okay. Hi, Jubin here. जी Hi. हाय हाय खैर मैं क्या बोलूँ, एक के बाद एक आपके सॉन्ग्स ऐसे आते हैं, धमाकेदार आते हैं कि बस सुनने की इच्छा हो जाती है. और ब्लू टू एंड दिस लद्दाख एंड दिस आउट ऑफ द वर्ल्ड है, बहुत सुंदर. आपका हर गाना लोगों के दिलों के अंदर चला जाता है, बहुत समा जाता है. मैं आपको ऑफ स्क्रीन भी बोल चुकी हूँ कि मुझे आपका ये दिल बार बार कह रहा मुझको. हाल ही में ये वाला गाना एक सीरियल में भी इस्तेमाल किया गया था. आर यू अवेयर ऑफ इट? एंड कैसा लगता है जब महिलाओं के घर और उनके दिल के अंदर भी आपकी आवाज़ ऐसे सीरियल के थ्रू चली जाती होगी? और गाने के बारे में अगर कुछ कहना चाहें. बहुत ही स्पेशल सॉन्ग है और दिस सॉन्ग इज बेसिकली द ये एक इंडिया और नेपाल का कॉम्बिनेशन रहा. ये सॉन्ग एक नेपाली फिल्म में मुझे गाने का मौका मिला और जो गाने के कंपोज़र हैं हमारे उत्तराखंड से पवनदीप राजन है. सो आई थिंक इट्स अ यू नो मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ, वो भी वहीं से बिलोंग करते हैं. साथ में काम करना और अच्छा काम करना जो लोगों को पसंद आए, लोगों के दिल में जगह बनाए. आई थिंक दैट्स व्हाट एन आर्टिस्ट लिव्स फॉर. आर्टिस्ट को एक बार अगर ताली लग जाती है तो फिर मुझे लगता है वो ख़राब हो जाता है उसको फिर उसके बाद उसका नशा चढ़ जाता है कि अब ताली चाहिए ही चाहिए. जितनी बार भी स्टेज पे जाऊँगा उतनी बार ताली चाहिए. तो आई थिंक हम लोग सब उसी के सताए हुए हैं और दैट सॉन्ग इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी स्पेशल. लोगों को बहुत पसंद आया वो गाना. रील्स बहुत बनी उस गाने पर डेफिनेटली. और बहुत जल्दी आई थिंक मैं उस गाने को अच्छी तरह से तैयार करके स्टेज पर भी उतारूंगा अपने साथ. सो दैट विल बी अगेन वेरी स्पेशल. थैंक यू. Jubin, Yohani, पूरी टीम को फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन. दिस इज सिमरन सिंह हियर. या थैंक यू सिमरन. ओके, मेरा सवाल से पहले मैं कहना चाहूँगा सर, जिस तरीके से पिक्चराइजेशन किया इट्स ब्यूटीफुल. मतलब वोकल्स तो ब्यूटीफुल है लेकिन जो पिक्चराइजेशन था दैट एडेड मोर वैल्यू टू द लिरिक्स. थैंक यू. ओके, मेरा सवाल जुबिन आपसे भी है और योहानी आपसे भी है. पहला सवाल मैं जुबिन आपसे पूछूंगा कि जिस तरीके से इसके लिरिक्स है मिल के बिछड़ते हैं, तो ऐसे कोई आपके ट्रिप्स आपके जहन में है जहाँ पे यू मेट समवन एंड वो आज वो बस यादों में है? मे बी वन ऑफ योर सोलो ट्रिप्स और एनी ट्रिप. इवन योहानी यू कैन कंट्रीब्यूट टू दैट. So yeah, I think when we are on a journey, we definitely meet new people. इस गाने के लिरिक्स मैं कहना चाहूँगा जो मेरे साथ कंपोज करते हैं रॉकी खन्ना, उन्होंने लिखे हैं इसके लिरिक्स. और उस पूरे गाने की थॉट ही वो है कि प्यार के बिना दोस्ती नहीं मुकम्मल हो सकती और दोस्ती के बगैर प्यार नहीं मुकम्मल हो सकता. They have to be together and only then love and friendship can form something there which could last for a very long time. अक्सर हम लोग when we travel it out, जब हम जाते हैं हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बट हाँ कुछ ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो आपके मन में और दिमाग में हर तरह से बस जाते हैं. Probably they become part of your memory line, and every time you hear a song and every time you see a place or every time you remember something will relate you to that person, individual. और अक्सर मुझे लगता है हम लोग मिले हैं. I have met a lot of people on my journey who I could relate to even today, and similarly I would like to give a big round of I would like to mention जो हमारे साथ co-actors हैं इसमें, जो मेरे opposite play कर रही हैं, साक्षी जोशी, brilliant actress again from Dehradun, from the mountains, and Martin from Chandigarh. He's from Bombay. Yeah, he's from. अरे मैं सुबह से सबको चंडीगढ़ बोल रहा हूँ इधर. I'm sorry, Martin. Okay, Martin is from. Agent is from. His agent is from Chandigarh. Sorry. So he's from Bombay, and चार लोग हम लोग साथ में, हम लोग की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही, तो मज़ा भी आया उसको काम को करने में. And Paji, I think Paji also felt very different while shooting us this time as compared to all the other times that he shot. काफी different. काफी different लगा. So yeah, we've met a lot of people, definitely, and they stay with us. Okay, Yohani, my question is to you. Okay, you want to add something to this one? No. Okay. Okay, so my question. She's the actual traveler. I think you should ask her. So Yohani, you have to come. She's literally traveling to India and meeting so many new people. Yeah, to share a memorable trip with us. Yeah, I think this trip for me was
very memorable because mostly I think more than it being a music video for me, it was about making connections. It was the first time I met all of these guys. It was really nice spending time together and having fun during the shoot. More than a music video, I think for me it's just like a trip. A trip, but someone's shooting it. But it was really nice. I love it. I would do it again. Okay, Yohani, my question to you is ki, how do you look upon to your journey, the love that you are getting from India? It's overwhelming, to be honest. I'm still processing it myself because everything has happened in like a really short time, and now I'm here. I moved here. My life has completely changed its trajectory, so I'm still getting used to it. But India has been very kind to me, so thank you, all of you guys. Thank you. जुबिन साहब सर बहुत अच्छा लगा आपका गाना और ये मतलब अपने हिंदुस्तान के अंदर और लद्दाख में फिल्माया है, सबसे बड़ी बात है। तो क्या कभी उम्मीद करेंगे कि आगे चल के आप देहरादून सिटी या उत्तराखंड की खूबसूरती को किसी एल्बम में लाना चाहें? असल में जो मेरा और नवजीत पाजी का पहला वीडियो था उत्तराखंड में शूट हुआ था। गाने का नाम था दिल चाहते हो या जहाँ चाहते हो हमसे बता दो कि क्या चाहते हो। मसूरी में हमने शूट करा था एंड हम लोग सिर्फ मौका ढूंढ रहे होते हैं कब हमें मौका मिलेगा कि उत्तराखंड जाके शूट कर सके। एक तो घर है, फिर ऊपर से पहाड़ हैं और थोड़ा सा एक अच्छी लाइटिंग का बहुत स्पेशल स्पेस है वहाँ पर। और पाजी को तो खैर बहुत ही ज़्यादा पसंद है देहरादून शूट करने के लिए। सो आई थिंक डेफिनेटली आने वाले टाइम में फिर कुछ जाकर के उत्तराखंड में शूट करेंगे। कभी सर देहरादून हम लोग देहरादून तो शूट करना चाहता हूँ। देहरादून में भीड़ भाड़ आजकल काफ़ी ज़्यादा, इट्स नॉट वेरी इजी टू शूट इन देहरादून। बहुत कठिनाई हो गई देहरादून में शूट करना। और थोड़ा सा भी देहरादून के लेफ्ट राइट जाएं तो हमारा ऋषिकेश आ जाता है, मसूरी आ जाता है। इट्स क्वाइट स्पेशल टू शूट है। हाँ, लेकिन कभी सिटी लाइफ के ऊपर अगर शूट करना हुआ तो डेफिनेटली देहरादून में शूट करेंगे। थैंक यू। Hi Jubin and Yohani, Nilima here. Hello. Hi. I love all your songs, Jubin, and Thank this you. one is fabulous again. And Yohani, welcome to India. मैं दोनों को ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप दोनों भी ऐसे लगता है कि दिल के मुसाफिर हैं. You are traveler by heart, I feel. So, हाँ यार, सही बात है ये सही बात है बिल्कुल जी। so what is traveling for you both? Traveling for me is about meeting new people, listening to their kind of music, and figuring out their cultures, where they come from. It's just everything is new, and traveling makes you get exposed to things like that. And I think that's how I listen to most of my music as well, from other people and other people's cultures. So yeah, just exploring. Hello, Jubin sir. Hello, this is Vinay. Hi Vinay. Okay, yes, sorry, yes. I will answer you first, then I'll come to Vinay. I love traveling. I'm a traveler. I was born a traveler. और मुझे लगता है एक बड़ी छोटी सी चीज़ शेयर करूँगा, उससे आपको शायद मेरा एक बहुत हमेशा से मानना रहा है कि अगर इंसान दूर तक देख सकता है, दूर तक सोच सकता है। एंड ट्रैवल करते हुए हमको एक मौका मिलता है कि हम ऐसी जगह जा सके जहाँ हम दूर तक देख सकते हैं। अक्सर हमारे सामने एक बिल्डिंग होती है, गाड़ी होती है, कोई लोग खड़े होते हैं या कुछ लोग, वी डोंट गेट टू सी दूर तक, वी डोंट गेट टू सी डिस्टेंस। और आई थिंक आई क्रेव टू सी डिस्टेंस। अगर मैं कहीं ऐसी जगह खड़ा हूँ किसी पहाड़ के ऊपर, तो मैं दूर तक देखना चाहता हूँ। एंड जस्ट काइंड ऑफ ओपन्स अप माय माइंड in so many ways to think and imagine things. Yeah, I'm a traveler by heart, absolutely. And I think all of us who've made the video, we were all really crazy for traveling. इसलिए इतना मजा उसमें आ रहा है वीडियो में सबको देख करके, including the director of the video. He travels so much more than us, actually. Hello sir, this is Vinay. मेरा सवाल जुबिन सर आपसे है कि आपने काफ़ी अमेजिंग सॉन्ग्स दिए हुए हैं, काफ़ी लोगों को खुश कर देते हो, काफ़ी लोगों को इमोशनल कर देते हो। तो ऑडियंस से रिस्पॉन्सेज मिलने के बाद किस थिंकिंग को लेके आप अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जाते हो? यार ऑडियंस का रिस्पॉन्स मेरे लिए बहुत ही
बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है कितनी बार ऐसा नहीं कि हमने जितने गाने निकाले सारे अच्छे गाने थे, कुछ गाने ऐसे थे जो नहीं पसंद आए जनता को, ऐसा हर बार होता है, काफ़ी बार होता है, कुछ फेलियर्स होते हैं, कुछ सक्सेस होती है। तो जो फेलियर्स हैं उनसे ऊपर आने के लिए करेक्ट क्रिटिसिज्म जो है जनता देती है, जो राइट रिव्यू होता है ना, क्योंकि जो बंदा आपके यूट्यूब के नीचे आपके कमेंट्स में आपके फॉलो करके आपको लिख रहा है, वो पर्सनली आपको जानता नहीं, आपके दोस्त हैं, आपके परिवार वाले तो बोलते हैं अरे बेटा बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया गाना बनाया तुमने, जनता बोल रही है कितना बेकार गाना है, बट घर वाले प्यार करते हैं आपसे तो वो बोलेंगे हाँ अच्छा गाना बनाया आपने। बट आई थिंक जनता का जो एक्चुअल रिव्यू आता है उससे हमें पता लगता है कि किस तरह से हमारा संगीत और हम परसीव करे जा रहे हैं, एंड विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वो समझने के लिए मुझे लगता है जनता के साथ टच में रहना बहुत ज़रूरी है। एंड थैंक्स टू मीडिया, आप लोग के थ्रू हमें मौका मिलता है एक्चुअली जनता को छू पाने का, उनकी जिंदगियां छू पाने का। जी दिस इज कॉल्ड द हिप्पी लुक। पाजी, डू यू वांट टू टॉक अबाउट माय लुक? मैं पाजी के ऊपर डालना चाहूंगा ये पूरा क्वेश्चन, क्योंकि दिस इज जुबिन, एक्चुअल जुबिन। मतलब बाकी तैयार हो गया, आप वैसे देखेंगे तो एक्चुअली जुबिन, दिस इज